Hello everyone and welcome back to my playlist of NeuroAnatomy which we are studying from Snell, and today we are going to discuss chapter number 15, which is about meninges. And meninges are very important because they cover the whole central nervous system basically. There are three meninges in total and they cover the brain. So if this is your brain, it is well covered by three layers, and same is also true for your spinal cord. So let's start our discussion first about the brain meninges, and then we will talk about the spinal cord meninges. The brain is actually it's a very important organ ना, बहुत important organ है, इसलिए it is very well protected. तो एक तो इसको एक ज़बरदस्त किस्म की strong सी खोपड़ी के अंदर रखा गया है inside the skull, so that is first protection. And then the brain is wrapped in three protective layers, और वो जो तीन protective layers हैं they are collectively called meninges, और उनके नाम हैं dura mater, then the second one is arachnoid mater, and then the third one is pia mater. ये नाम हमने पूरी न्यूरोएनाटमी में कई दफ़ा डिस्कस भी किए हैं, और आज इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में इनको हम डिस्कस करेंगे. वन बाय वन एक एक लेयर उठाते हैं और उसकी जो निटिग्रिटी एनाटॉमिकल बिट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज द ड्यूरा मैटर. नाउ ड्यूरा मैटर इज द आउटर मोस्ट कवरिंग. ओके, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग. सो लेट मी फाइंड अ डायग्राम फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल, बल्कि मैं ड्रॉ करता हूँ. सो सपोज ये आपका ब्रेन है. सो ब्रेन के साथ बिल्कुल इंटीमेटली जो लेयर अटैच्ड होगी, दैट लेयर इज नोन एज पाया मैटर. सो पाया मैटर इज द क्लोजेस्ट टू द ब्रेन. फिर पायामीटर के बाद जो सेकंड लेयर होगी कवरिंग की, दैट इज नोन एज एरेक्नॉइड मैटर, और एरेक्नॉइड मैटर के बाहर जो सबसे आउटर कवरिंग है दैट इज नोन एज ड्यूरा मैटर. ठीक है, अब ये जो ड्यूरा मैटर है दिस, और ये चूंकि सबसे आउटर है तो इसके बाहर क्या मौजूद होगा, स्कल. सो इसको ऐसे समझ लें कि जो ड्यूरा मैटर है दैट इज ऑन वन साइड इन कॉन्टैक्ट विद द स्कल एंड ऑन द अदर साइड इज इन कॉन्टैक्ट विद द अदर मेनिंजियल लेयर्स एंड द ब्रेन. और होता एक्चुअली ये है कि जो दो इसके लेयर्स हैं इनके बीच में कहीं कहीं पर गैप होता है, और वो जो गैप है इट इज फिल्ड विद द वेनस ब्लड, और उसे हम नाम देते हैं वेनस साइनस. वी विल आल्सो डिस्कस वेनस साइनसेस हियर. ड्यूरा मैटर ऑफ द ब्रेन इज कन्वेंशनली डिस्क्राइब्ड एज टू लेयर्स. There is one outer layer which is called the endosteal layer, and then there is a meningeal layer. जो मैंने आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बताया ना कि this is your brain, और brain के साथ बिल्कुल intimately attached जो layer है that is the pia mater. Pia mater के बाहर जो layer है that is the arachnoid mater. उसके बाहर जो layer है that is the dura mater. So dura mater की भी फिर दो further layers हैं जो काफ़ी क्लोजली अटैच्ड होती हैं एक दूसरे के साथ. वन लेयर इज टूवर्ड्स दी स्कल एंड दिस लेयर इज नोन एज एंडोस्टियल लेयर बिकॉज ये एंडोस्टियम की तरफ है, पेरियोस्टियम की तरफ है. इट इज टूवर्ड्स द एंडोस्टियम ऑफ द क्रेनियल कैविटी, सो दैट इज कॉल्ड द एंडोस्टियल लेयर. फिर जो दूसरी लेयर है दैट इज टूवर्ड्स द मेनिंजियल अरेक्नॉइड एंड पाया की तरफ है. सो दिस इज व्हाई दिस इज नोन एज द मेनिंजियल लेयर. सो ड्यूरा मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू layers basically, and where the two layers separate and get filled with blood, this is what we call a venous sinus. Okay, so if we look at this diagram, for example, obviously this is the skin and the scalp, and then this bit you are looking at the skin, and from here you can see that this is the cranial cavity का bone वाला part है ये, और इस bone वाले part के बाद then are the layers of dura mater, arachnoid mater, and the space between them. So this layer, for example, which is towards the periosteum of the skull, this is the dura mater की endosteal layer. और फिर ये second layer चल रही है, this is the dura mater की meningeal layer. और यहाँ देखें for example, ये जो endosteal layer है और जो meningeal layer है उनके बीच में ये gap आ गया. So this is filled with blood and this is what is known as a venous sinus. ठीक है, तो dura mater की दो layers हैं, ये बात याद रखनी है. जो endosteal layer है, endosteal layer is the layer which is towards the periosteum of the skull, and it is actually the periosteal layer. So endosteal layer is nothing more than the periosteal covering of the inner surface of the skull bone. At the foramen magnum, it does not become continuous with the dura mater of the spinal cord around. So that's an important point. Okay, ये जो endosteal layer है dura mater की, it is only in the cranium. Around the margins of the foramina in the skull, it becomes continuous with the periosteum on the outside of the skull. So it's kind of the outer shield, which is a tough membrane, which is actually the endosteal lining of the skull bones, or it's nothing fancy about it. Okay, और sutures पे भी it is continuous with the suture or ligament. So basically bones के साथ blend हो जाती है. अगर कोई foramen आता है, foramen spinosa में, ovale, lestra में, whatever, तो यहाँ पे जो endosteal layer है dura mater की, that is actually blended with the periosteum. That's
an easy stuff to understand. Then there is a meningeal layer. Now meningeal layer of the dura mater is towards the other meninges, क्योंकि यहाँ पे there will be arachnoid matter, pia matter, so उनकी तरफ जो layer है dura mater की, that is known as the meningeal layer, is the dura mater proper. It is dense, strong, fibrous membrane covering the brain and is continuous through the foramen magnum with the dura mater of the spinal cord. So it continues in the spinal cord. The endosteal layer does not continue in the spinal cord. It provides tubular sheaths for cranial nerves as the cranial nerves pass through the foramina. आप देखें, इस बात को नोट करें कि जो एंडोस्टियल लेयर है ये सिर्फ क्रेनियम में है. जब फोरामिना कोई आते हैं तो ये फोरामिना के साइड्स पे इट ब्लेंड्स विद द पेरियोस्टियम, लेकिन इन फोरामिना में से जो नर्व निकलती है उस नर्व के इर्द गिर्द कौन सी लेयर कंटिन्यू करती है? द मेनिंजियल लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर. नाउ द मेनिंजियल लेयर सेंड्स इनवर्ड 4 septa. That's an important point. And these 4 septa actually divide different parts of the brain, and the purpose is actually to support different parts of the brain. और वो support किस तरह से करता है कि देखें, 2 cerebral hemisphere है ना हमारे पास. there is one cerebral hemisphere, there is another cerebral hemisphere. तो जो ड्यूरा मैटर की meningeal layer है वो इन दोनों cerebral hemisphere के बीच में एक एक्सटेंशन सेंड करती है ताकि ये जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं इनको सपोर्ट मिले, और उस एक्सटेंशन को फॉर एग्जांपल हम नाम देते हैं फॉक्स सेरिब्राई. इसी तरह जो सेरिबेलार हेमिस्फीयर्स हैं उनके बीच में जो एक्सटेंशन है दैट इज नोन एज फॉक्स सेरिबेलाई. देन देयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरा मैटर बिटवीन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड दी सेरिबेलम. यहाँ पर एक एक्सटेंशन होती है ड्यूरा मैटर की विच अगेन सपोर्ट्स दीज 2 स्ट्रक्चर, एंड दिस इज नोन एज टेंटोरियम cerebelli. This is tentorium cerebelli. And then finally there is an extension which is called diaphragma celli which divide the cranial cavity in 2. तो ये जो 4 extensions हैं, ये चारों extension किसकी हैं? meningeal layer of dura mater की हैं, and they divide the whole cranial cavity into different compartments sort of thing. So एक जो है 2 cerebral hemisphere के बीच में dip करती है, एक 2 cerebellar hemisphere के बीच में dip करती है. One divides the cerebral hemisphere from the cerebellar hemisphere, and they're all very important to provide support and facilitation to the nervous structures, because जब हम मूव करते हैं so obviously अक्सर ऐसी पॉइंट्स आते हैं कि जब बहुत तेज़ी से मूव करते हुए रुकते हैं, गाड़ी में मूव कर रहे हैं या ट्रेन में मूव कर रहे हैं, so there are always in the movement chances of rapid acceleration and deceleration. तो ये rapid acceleration और deceleration को कंट्रोल करने के लिए ये जो टेंट लाइक प्रोजेक्शंस है ना ये बड़ा हेल्प आउट करती हैं. ओके, सो लेट मी देन टेक you to further details of each one of these. So Fox cerebri is a sickle-shaped fold of dura mater. कौन सी layer of dura mater? Meningeal layer. It lies in the midline and separates the 2 cerebral hemispheres. ठीक है, बस इतनी बात आपको ये याद रखनी है, और further जो details हैं वो कहाँ attach हो रहे हैं, if you can remember this, it's good. The anterior जो इसका narrow end है, it is attached to the internal frontal crest and the crista galli. Its posterior end actually blends in the midline with the upper surface of the tentorium cerebelli. तो ये इस तरह से होती है कि if this is the section and you're looking, एक cerebral hemisphere हमने हटा दिया है तो यहाँ पे ये आपको extension of dura mater दिख रहा है, the fox cerebri. दूसरी तरफ इसके cerebral hemisphere होगा, तो एक cerebral hemisphere हटा दिया है, एक cerebral hemisphere दूसरी तरफ है, तो बीच में ये मौजूद है fox cerebri. ये जो आपको horizontal structure दिख रहा है, obviously हमने cerebral hemisphere हटा दिया है, इसके नीचे क्या होगा? cerebellum होगा. So this is known as tentorium cerebelli. अब ये देखें fox cerebri anteriorly तो यहाँ crista galli में अटैच होता है, लेकिन पोस्टीरियरली अटैच होता है इनटू द टेंटोरियम सेरेबेलाई, और दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ फॉक्स सेरेब्राई एंड इट्स अटैचमेंट टू द टेंटोरियम सेरेबेलाई. अब ये जो लेयर है इट कंटेन्स सम साइनसेस एज वेल. द सुपीरियर सैजिटल साइनस रन्स इन द अपर मार्जिन ऑफ this fold, and the inferior sagittal sinus runs in the lower margin. So as the name indicates, the superior and the inferior sagittal sinus, and then there is also a straight sinus which runs along its attachment to the tentorium cerebelli. Now again, if you look at this diagram, where is the fox cerebri? This is the fox cerebri, the green one. तो इसके ऊपर जो गैप है, obviously गैप इसलिए बना क्योंकि ये फोल्ड अंदर की तरफ डिप कर रहा है, और ऊपर यहाँ पे कौन सी लेयर होगी? There will be endosteal layer. This is the meningeal layer. तो ये जो एंडोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर के बीच में गैप बनेगा दैट विल बी नोन एज सुपीरियर सैजिटल साइनस, और नीचे जो गैप बनेगा दैट इज नोन एज इंफीरियर सैजिटल साइनस. इन गैप्स में ब्लड भरा हुआ है, इसीलिए दीज आर कॉल्ड साइनसेस. सो ऊपर अपर बॉर्डर पे सुपीरियर सैजिटल साइनस, लोअर बॉर्डर पे इंफीरियर सैजिटल साइनस, और जहां ये अटैच हो रहा है टेंटोरियम सेरिबेलाई के साथ, विच इज ऑल दिस ग्रीन स्ट्रक्चर, यहाँ
पे जो साइनस बनती है दैट इज नोन एज स्ट्रेट साइनस। तो ये 3 साइनसेस हैं विच आर एसोसिएटेड विद फॉक्स सेरेब्राई एंड दैट इज इंपॉर्टेंट डिस्कशन बिकॉज ड्यूरा मैटर की आपको पहले तो इसके पार्ट्स पता होने चाहिए। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ड्यूरा मैटर, वन इज द एंडोस्टियल पार्ट, द अदर वन इज द मेनिंजियल पार्ट। फिर जो मेनिंजियल पार्ट है वो डिफरेंट जगहों पे डिप्स एंड एक्सटेंशन है, जिसमें से पहली है फॉक्स सेरेब्राई। तो इनकी सबकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, प्लस इनके साथ अगर कोई साइनसेस एसोसिएटेड है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। देन द सेकंड एक्सटेंशन ऑफ meningeal layer of dura mater is the tentorium cerebelli. It is a crescent shaped fold of dura mater that roof over the posterior cranial fossa. तो इसके ऊपर ये जो tentorium cerebelli है इसके ऊपर सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा, इसके नीचे सेरिबेलम होगा। ठीक है, तो ये दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस। इट कवर्स द अपर सरफेस ऑफ द सेरिबेलम एंड सपोर्ट्स द ऑक्सीपिटल लोब्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो इसके ऊपर सेरिब्रम होगा और इसके नीचे सेरिबेलम होगा। इन द एंटीरियर एज there is a gap which is known as tentorial notch and this is important because यहाँ से mid brain और brain stem के structures गुजरते हैं। So if you look here, this is the tentorial notch. That is what is we call the tentorial notch, जिसमें से obviously structures नीचे पास होंगे। अगर ये पूरी completely membrane bound filled होती तो obviously कोई tentorial notch नहीं होता, brain stem नीचे कैसे जाता। तो brain बड़ा beautifully पूरी body आपकी बड़ी beautifully designed है। The fixed border is attached to the posterior clinoid process. ये इसकी posterior attachment है। The superior border of the petrous bone. This is not actually very high yield. If you want to remember, go ahead. Good luck. The free border runs forward at its 2 ends, crosses the attached border and is affixed to the anterior clinoid processes. So they are on the anterior side attached to the anterior clinoid processes. Again, something which if you want to remember, good luck, not high yield. At the point where the 2 borders cross, the 3rd and the 4th cranial nerves pass. This is an important point. Forward to enter the lateral wall of the cavernous sinus. Close to the apex of the petrous part of the temporal bone, the lower layer of the tentorium is pouched forward beneath the superior petrosal sinus to form a recess for the trigeminal nerve. Again, it's a very complicated text, but just remember that the trigeminal nerve, trigeminal ganglion, and as well as 3rd and the 4th cranial nerve, they are all in very close relationship to the tentorium cerebelli. This is an important discussion, okay? So don't forget कौन कौन सी nerves associated हैं. Now the falx cerebri and the falx cerebelli are attached to the upper and lower surfaces of the tentorium cerebelli. अब ये इस तरह से है कि ये एक ऊपर से फॉक्स सेरिब्राई, देन देयर इज टेंटोरियम सेरिबेलाई और नीचे यहाँ पे फॉक्स सेरिबेलाई होगा बिकॉज सेरिबेलम विल बी डाउन हियर। दिस इज द एरिया फॉर सेरिब्रम। ओके, सो बात ये हो रही है कि जो फॉक्स सेरिब्राई है और जो फॉक्स सेरिबेलाई है दे आर बोथ अटैच्ड ऑन द टेंटोरियम सेरिबेलाई। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राइट, द स्ट्रेट साइनस रन्स अलॉन्ग इट्स अटैचमेंट टू द फॉक्स सेरिब्राई। ये तो हमने जब फॉक्स सेरिब्राई में आपको बताया तभी मैंने ये बात की थी। दिस इज द स्ट्रेट साइनस। स्ट्रेट साइनस इज द गैप विच इज प्रेजेंट वेयर द फॉक्स सेरिब्राई इज अटैच्ड टू द टेंटोरियम सेरिबेलाई। दिस इज फिल्ड विद ब्लड एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट साइनस। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हर प्रोजेक्शन के साथ अगर कोई साइनस एसोसिएटेड है तो वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो स्ट्रेट साइनस इज एन इंपॉर्टेंट वन एंड आफ्टर द स्ट्रेट साइनस आई हैव टू टॉक अबाउट द ट्रांसवर्स साइनस दैट रन्स अलोंग इट्स अटैचमेंट टू द ऑक्सीपिटल बोन। सो इफ यू लुक अगेन एट दिस डायग्राम, सो दिस इज द स्ट्रेट साइनस एंड देन वी शुड ऑल्सो हैव अ लुक एट द ट्रांसवर्स साइनस। और इस डायग्राम में एक्चुअली दिस इज नॉट वेरी क्लियर, लेट मी फाइंड अ डायग्राम हेयर। सो दिस डायग्राम is another section where you can see different parts of the dura mater and this obviously is the occipital bone. तो जहाँ occipital bone के साथ इसकी attachment है, there you see these sinuses on both the sides. These are known as transverse sinuses. So transverse sinuses are where the tentorium cerebelli is attached to the occipital bone, ठीक है। Alright, so we are done with the falx cerebri. Then we discussed tentorium cerebelli. Now the third projection of dura mater. This is called falx cerebelli. So this is an extension of dura mater which separates the 2 lobes of cerebellum.
It's a small sickle-shaped fold of dura mater attached to the internal occipital crest, projects forward between the two cerebellar hemispheres. बिल्कुल वैसे जैसे fox cerebri was attached between the two cerebral hemispheres. Its posterior fixed margin actually contains the occipital sinus. So इसमें यहाँ पे occipital sinus will be in the posterior margin. So let me see if we can figure it out. So here what we are seeing, so this is another view, and I like this one because what you're looking at is the tentorium cerebelli. This is all the tentorium cerebelli. You see there, and you see different sinuses. This is a straight sinus. ये वो जगह है जहाँ पे fox cerebri attach होगा. Then there are transverse sinuses. ये occipital bone के साथ attachment की जगह पे right and left transverse sinuses. So that's a good one actually. And then you can also see the superior petrosal sinus with the petrous bone and the attachments to the clinoid process and a gap and the tentorial notch in the tentorium cerebelli. So that's a good one. That I like this diagram actually. All right, then the fourth extension, the diaphragma sella, that's a small circular fold of the dura mater that forms the roof of the sella turcica. So sella turcica, and this is basically in connection with, there's a small opening in the center which allows the passage of the hypophysis cerebri. So let me try and find figure 15.5. So that is where you can see the hypophysis cerebri, or is hypophysis cerebri ke ird gird you see a fold of dura mater which is known as diaphragma sella. So these all these folds are very very important कि dura mater की क्या क्या extensions हैं, इसके parts क्या हैं, किस extension of dura mater की क्या क्या relationships हैं sinuses के साथ, और अगर कोई nerve हैं तो important nerves के साथ. Okay. Now obviously this is composed of different types of cells. This is a covering, so it is supplied by the blood supply as well, it is supplied by the nerve supply. So you have to understand कि dura की nerve supply क्या है, dura की blood supply क्या है. So let's talk about the dural nerve supply. Branches from the trigeminal, vagus and the first three cervical spinal nerves, and branches from the sympathetic trunk as well, they all pass to the dura mater. So it's pretty busy in terms of nerve supply. The dura possesses numerous sensory endings which are sensitive to stretching, which produces the sensation of the headache. I mean, there is no individual on this planet Earth who has never experienced headache. So headache is something very very common, experienced by most of us at least on some time point in our lifetime. So that particularly in many of the cases it is because of stretching of dura mater, and since dura mater is stretched and it is filled and bombarded with a lot of nerve endings, this pain is felt as headache. Okay, a stimulation of the sensory nerve endings of the trigeminal nerve above the level of the tentorium cerebelli produces referred pain to an area of skin on the same side of the head because of the similar nerve supply. Stimulation of the dural endings below the level of the tentorium produces pain referred to the back of the neck. So that is an important distinguishing point. If the patient comes to you and refers कि जी मुझे यहाँ पे भी pain हो रहा है, headache भी हो रहा है, back of neck पे भी हो रहा है, so you think of the causes which are infratentorial, यानी tentorial cerebelli से नीचे का कोई मसला है. Otherwise you think of stuff same side of the face or headache, so there may be some problem supratentorial structures में. So that's an important point to remember because it helps you to distinguish clinically कि origin of insult या origin of problem कुछ भी हो सकता है ना, tumor हो सकता है, कोई inflammation हो सकती है, तो किस part की inflammation है, कहाँ tumor है, so you get a hint from the clinical history. Now the arterial supply. There are so many arteries which supply the dura mater from internal carotid, maxillary, ascending pharyngeal, occipital, vertebral. Wow, a lot of arterial supplies. From the clinical standpoint, the most important one is the middle meningeal, which can be damaged in the head injuries, and therefore then the dura can be dead. The middle meningeal artery arises from the maxillary artery. अब actually आपको इन सब का root पता होना चाहिए. You should know internal carotid कहाँ से आ रही है, कहाँ से गुजर रही है, maxillary कहाँ से आ रही है. So try to recall everything, okay? यहाँ पे भी इसका पूरा root दिया हुआ है. Ultimately middle meningeal is from an spinosum. ये निकलती है और supply करती है. So the whole root is probably not important, but you should know मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए कि मिडिल मेनिंजियल आ कहाँ से रही है, जा कहाँ से रही है, किसको सप्लाई कर रही है, that sort of thing. And then the venous drainage is by the meningeal vein which lie in the endosteal layer of the dura mater.
The middle meningeal vein follow the branches of the middle meningeal artery and drains ultimately into the pterygoid venous plexus. Also in the sphenoparietal sinus, the vein lie lateral to the arteries. Easy stuff. Now, few words about the dural venous sinuses. हम काफ़ी देर से ये बात कर रहे हैं कि जो ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स जहाँ सेपरेट होंगी, फॉर एग्जांपल दिस इज द एंडोस्टियल लेयर एंड दिस इज द मेनिंजियल लेयर एंड दिस इज सेपरेटेड समथिंग लाइक दिस, क्योंकि ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर और ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में फॉक्स सेरिब्राई डिप कर गई. जैसे ही डिप करेगी तो यहाँ पे गैप बनेगा, और ये जो गैप है बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ ड्यूरा मैटर, ये अगर ब्लड से फिल्ड होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल अ वेनस साइनस. सो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइनसेस बनती हैं? ऑल द साइनसेस आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ जनरेशन ऑफ अ गैप. जहां कहीं ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स एक दूसरे से दूर मूव करेंगी, यानी कि अगर ऐसे चल रही होंगी कहीं पर जस्ट लाइक दिस एक दूसरे के साथ साथ, तो इनके बीच में कोई गैप नहीं है, कोई ब्लड नहीं भरेगा. लेकिन जहां कहीं एंडोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर में कोई इस तरह की एक्सटेंशन या कोई फोल्ड आएगा, दिस इज वेयर द साइनस इज प्रोड्यूस्ड. सो साइनस इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज segregation and separation of the two layers because of a fold. चार folds तो आपको पता है, एक fox cerebri है, tentorium cerebelli है. So जहाँ जहाँ fold होगा वहाँ वहाँ venous sinus होगी. So venous sinuses of the cranial cavity are situated between the layers of the dura mater. तो ये बात समझ में आ गई, दो layers के बीच में. Their main function is to receive blood from the brain through the cerebral veins and the cerebrospinal fluid from the subarachnoid space through the arachnoid villi. The blood in the dural sinuses ultimately drains into the internal jugular vein. So that's an important point. The dural sinuses are lined by endothelium and their walls are thick but devoid of muscular tissue. They also do not have valves. So these are all very important characteristics. मैं पढ़ता जा रहा हूँ but ये simple है या इसको समझना आसान है, तो इसलिए I'm not spending time on them. So they do not have valves. Emissary veins, which are also valveless, connect the dural venous sinuses with the diploic veins of the skull with the veins of the scalp. So these sinuses are ultimately draining into internal jugular vein. They are also connected to the veins of the scalp through the diploic veins, and I think they have shown this in the very first diagram. So for example, if you look here, where is the sinus that you can locate? This is the sinus, that is the superior sagittal sinus, and these you see are the diploic veins, and here is the superficial vein of the scalp. So ये sinus से connect कर रहा है इस superficial vein को, and these connecting veins are called emissary veins, and they are going and traveling through the bone. अगर यहाँ पे कोई fracture होगा, so this connection will be disturbed. That's an important clinical point. Okay, right. तो यहाँ तक सारी बात आसान थी. कुछ नाम देकर अब इन्होंने कुछ साइनसेस एक्सप्लेन किए. ये नाम हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट लेट अस गो थ्रू देम वन मोर टाइम बिफोर वी एंड द टॉपिक ऑफ ड्यूरा मैटर. The first one is the superior sagittal sinus. Now the superior sagittal sinus occupies the upper fixed border of the falx cerebri. So this is in the falx cerebri. So suppose this is the endosteal layer and this is the meningeal layer, and here we have right cerebral hemisphere and this is the left cerebral hemisphere, and the meningeal layer dips like this to separate the two cerebral hemisphere. So the gap generated here between the two layers of the dura mater in the superior part of the falx cerebri, this is the falx cerebri, है ना. तो इसके जो superior part में gap बनेगा, this gap is known as superior sagittal sinus. It begins anteriorly at the foramen cecum where it occasionally receives vein. This is something that you can actually also forget about. And superior sagittal sinus के अलावा falx cerebri के साथ और कौन attached है? There is transverse sinus. We have discussed these earlier on in this video, so I can kind of skip them. Then the superior sagittal sinus in its course receives, इसमें कहाँ से veins आके drain करती हैं? It receives superior cerebral veins at the internal occipital protuberance. It is dilated to form the confluences of the sinuses. So हम एक्चुअली साइनसेस पे पूरा चैप्टर अलग से भी है, सो विल डिस्कस द साइनसेस इन डिटेल. यहाँ पे मेरा पर्पस ये है और इस चैप्टर का पर्पस बेसिकली ये है कि आपको इन तमाम साइनसेस का कॉन्सेप्ट पता हो, ये होती क्या है और इनमें ब्लड कहाँ से आता है और ये किस
एक्सटेंशन ऑफ द मेनिंजेस के साथ एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है। जैसे सुपीरियर सैजिटल साइनस है तो वो फॉक्स सेरेब्राई की सुपीरियर सरफेस के साथ एसोसिएटेड है। बिल्कुल इसी तरह जो इन्फीरियर सैजिटल साइनस है इट इज़ एसोसिएटेड विद द लोअर बॉर्डर ऑफ द फॉक्स सेरेब्राई। स्ट्रेट साइनस जो है इट इज़ एट द जंक्शन ऑफ द फॉक्स एंड द टेंटोरियम। सो वी हैव एक्चुअली डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स, ओके। ट्रांसफर्स साइनस इज समथिंग वेयर द टेंटोरियम सेरेब्राई इज अटैच्ड विद द ऑक्सीपिटल बोन। सो वी हैव डिस्कस्ड दैम, ओके। इससे ज़्यादा जो साइनसिस का डिस्कशन है दैट वी विल डिस्कस इन, इसकी पूरी एक अलग वीडियो है। देयर इज़ अ कैवर्नस साइनस विच आर सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द cranial fossa on each side of the body of sphenoid. So if you look at this diagram, let me take you to the relevant diagram. I think this, no, here. So here you see the sphenoid and sphenoid के दोनों तरफ ये जो साइनस है that is known as the cavernous sinus. Very important because इसके अंदर से कुछ बहुत important structures गुजर रहे हैं. You see the internal carotid artery is traveling through the cavernous sinus. Very important, and there are some nerves as well. So there is an oculomotor nerve, there is trochlear nerve, there is ophthalmic division of the trigeminal, there is maxillary division of the trigeminal abducens nerve. So very important structures which are actually traveling through the cavernous साइनस, ओके। सो आपको साइनसिस के नाम पता हो, उनमें क्या ड्रेन करता है, अगर कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर उसके रिलेशन में है तो वो मालूम होना चाहिए। जैसे कवर्नस साइनस में एब्डुसेन नर्व, सिंपैथेटिक प्लेक्सस, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ऑल दीज थिंग्स, ट्राइजेमिनल की डिफरेंट ब्रांचेस जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाई। द साइनसेस, द कवर्नस साइनसिस की बात हो रही है, दे ड्रेन पोस्टीरियरली इन द सुपीरियर एंड इंफीरियर पेट्रोजल साइनस। आई थिंक जस्ट पार्क दिस डिस्कशन ऑफ साइनसेस फॉर नाउ। नाम याद कर लें इस चैप्टर में और उनकी लोकेशंस याद कर लें। इससे ज़्यादा जो है साइनसिस का अलग चैप्टर है, पूरा वीडियो उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ड्यूरामीटर के बारे में दैट्स ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द सेकंड लेयर ऑफ द मेनिंजियल कवरिंग्स विच इज़ द एरेक्नॉइड मैटर, और फिर पाया मैटर की बात करते हैं। सो जो एरेक्नॉइड मैटर है इट इज़ अ डेलिकेट, this is unlike what we discussed in the dura matter. Dura matter was a strong, tough, fibrous type of layer, but the arachnoid matter is delicate. It's impermeable membrane covering the brain and lying between the pia mater, which is the innermost, and the dura mater, which is the outermost. It is separated from the dura by a potential space which is known as the subdura, and it makes sense. देखें, अगर ये ब्रेन है और इस ब्रेन की मैंने आपसे बताया कि इंटीमेटली जो लेयर अटैच है दैट इज़ द पाया मैटर, उसके बाद जो लेयर अटैच है दैट इज़ द एरेक्नॉइड मैटर, और सबसे बाहर जो लेयर अटैच है दैट इज़ द ड्यूरा मैटर। अब ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में ये जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड सब ड्यूरल, क्योंकि ये ड्यूरा के नीचे है ना, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड सब ड्यूरल स्पेस। इसी तरह जो एरेक्नॉइड के नीचे स्पेस होगी दैट विल बी नोन एज सब एरेक्नॉइड स्पेस। यानी मैं अब ये कह सकता हूँ कि ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर की बीच की स्पेस का नाम है सब ड्यूरल, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर की बीच की स्पेस का नाम है सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो ये स्पेसेस इस तरह से हैं, ठीक है। सो सब एरेक्नॉइड स्पेस इज रिटन हियर एंड दिस इज द स्पेस व्हिच इज फिल्ड विद द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सो सब एरेक्नॉइड स्पेस यानी पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में जो लिक्विड है दैट इज द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। दैट इज समथिंग दैट यू मस्ट नो, इसमें कोई गड़बड़ नहीं चलेगी। द एरेक्नॉइड ब्रिजेस over the sulci on the surface of the brain, and in certain situation the arachnoid and pia are widely separated to form subarachnoid cisternae। यानी इनके बीच में जो स्पेस है वो जाहिर है ब्रेन जब डिप करेगा गारा एंड सल्काई जो हमने पढ़ा था तो पाया मैटर तो ब्रेन के साथ ही डिप करेगी, लेकिन एरेक्नॉइड मीटर ऊपर ऊपर होती है, तो बीच में ये जो गैप बन जाता है इसको हम कहते हैं subarachnoid cisternae। The cisternae cerebellomedullaris lies between the inferior surface of the cerebellum and the fourth ventricle, and the cisternae interpeduncularis, ये दो तो एटलीस्ट आपको नाम पता होने चाहिए, between the two cerebral peduncles. All the cisternae are in free communication with one another and with the remainder of the subarachnoid space because these are just extension of the subarachnoid space. In certain areas, the arachnoid projects into the venous sinuses to form arachnoid villi. The arachnoid villi are most numerous in the superior sagittal sinus. Aggregation of the arachnoid villi are referred to as the arachnoid granulations. ये भी मैं दिखाता हूँ आपको डायग्राम में. The arachnoid villi serve as the sites where CSF diffuses into the blood. So that's an important site. जहाँ जो CSF है वो subarachnoid space से diffuse करता है into the bloodstream. The arachnoid is connected to, let me first show you the diagram. Where is the diagram to show you the arachnoid granulation? So this, for example,
ये आप देख रहे हैं कि दिस इज द सुपीरियर सैजिटल साइनस और इसमें प्रोजेक्शंस हैं ऑफ द एरेक्नॉइड मैटर. दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एरेक्नॉइड ग्रैन्युलेशंस एंड दिस इज अ important point because they are important site for connection of CSF from the subarachnoid space into the bloodstream. The arachnoid is connected to the pyometer across the fluid subarachnoid space by delicate strands of fibrous tissue. यानी ये ऊपर अगर arachnoid चल रही है और नीचे अगर पाया चल रही है तो कहीं कहीं there are strong fibrous connections ताकि इनको support मिलता रहे. Structures passing to and from the brain to the skull or its foramina must pass through the subarachnoid space. All the cerebral arteries, for example, the veins, they have to travel across the subarachnoid space to enter into the brain substance or exit from the brain substance. ठीक है. The arachnoid fuses with the epineurium of the nerves, so it is continuous with the nerves और फिर उनके साथ blend हो जाती है. In case of the optic nerve, the arachnoid forms a sheath of the nerve which extends to the orbital cavity through the optic canal and fuses with the sclera of the eyeball. ये sclera तक जाता है. So if you look at the diagram, this is the optic nerve surrounded by the pia matter and then surrounded by the arachnoid matter and then the dura matter. So optic nerve is covered with all the meningeal layers all the way up to the sclera. देखिए यहाँ तक आकर के ये इसके साथ join हो रहा है. So basically optic nerve is well shielded by all of the meningeal layers. Therefore the subarachnoid space extends around the optic nerve as far as the eyeball. अब जाहिर है pia matter भी यहाँ आ रही है, एरेक्नॉइड भी आ रहा है और ड्यूरा भी आ रहा है. सो एरेक्नॉइड के नीचे यहाँ पे सब एरेक्नॉइड स्पेस होगी जिसके अंदर CSF होगा. सो आपकी ऑप्टिक नर्व के इर्द गिर्द CSF होता है. इट्स नॉट समथिंग व्हिच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. इजी बीजी स्टफ है ना. Now the CSF, which is the cerebrospinal fluid, is produced by the choroid plexus within the lateral, third and the fourth ventricles of the brain. Ventricles की जब वीडियो करेंगे तब ये बात डिस्कस करेंगे कि CSF कैसे बनता है. It escapes from the ventricular system of the brain. Basically brain के अंदर जो कैविटी होगी ना, ब्रेन के अंदर की जो अपनी कैविटीज हैं, these are called the ventricular system. इसमें CSF बनता है और फिर ये CSF इसमें से निकलता है by there are 3 foramina in the roof of the fourth ventricle and then from those foramina it actually enters into the subarachnoid space. So subarachnoid space में जो CSF है वो subarachnoid space में बन नहीं रहा. The CSF is being produced in the cavities of the CNS, which is called the ventricular system. So ventricular system में वो बनता है और फिर निकलता है. 3 फोरामिना है, उनमें से निकल के वो एंटर होता है subarachnoid space में. The spinal subarachnoid space extends down as far as the second sacral vertebrae. क्योंकि इसके बाद फिर ये लेयर्स फ्यूज कर जाती हैं तो subarachnoid स्पेस खत्म हो जाती है. In addition to removing the waste product associated with the neuronal activity, the CSF provides a fluid medium in which the brain floats all the time. This mechanism effectively protects the brain from trauma. तो एक cushion provide होता है CSF से. In addition, the fluid is now believed to play an important role in the hormonal transport. A lot of research being conducted in this direction. Now the last layer, which is intimately related to the brain surface, and when I say intimately related, so अगर ये brain है तो ब्रेन के साथ बिल्कुल चिपकी हुई ये लेयर होती है. इस तरह बिल्कुल उसके गारा सल्काय में भी मूव करती है. सो बिल्कुल चिपकी हुई लेयर है. दिस इज द पाया मैटर. इट्स अ वैस्कुलर मेम्ब्रेन कवर्ड बाय द फ्लैटेंड मेसोथेलियल सेल्स. इट क्लोजली इन्वेस्ट द ब्रेन. यानी पूरा उसके साथ चिपकी हुई चल रही होती है. ओके, एंड इट ऑल्सो कवर्स द गारा एंड डीपेस्ट सल्काय में भी डिप करती है. सो इट एक्सटेंड्स आउट ओवर द क्रेनियल नर्व्स एंड फ्यूजेस विद द एपिन्यूरम. सो अगर ये ब्रेन में से कोई क्रेनियल नर्व निकल रही है तो ये जो मेनिंजियल लेयर्स हैं ये एक टाइम के बाद आके इसकी एपिन्यूरम के साथ ऐसे ब्लेंड कर जाती हैं. दैट वाज एन एक्सेप्शन. ऑप्टिक नर्व जिसमें ये कंटिन्यू करती हैं अप टू द स्क्लेरा. राइट, हो गया जी ये बात. द सेरिब्रल आर्टरीज एंटरिंग द सब्सटेंस ऑफ द ब्रेन कैरी अ शीथ ऑफ द पाया मैटर विद देम. ठीक है, उनको पियर्स करके आती है ना, इसलिए द पाया मैटर फॉर्म्स द टीला कोराइडा of the roof of the third and the fourth ventricles of the brain and it fuses with the ependyma to form the choroid plexus. Basically जो pyometer है ना, it's highly vascular membrane and it fuses with a couple of other structures to make the choroid plexus, and this choroid plexus in the ventricle of the brain is responsible for production of CSF. So pyometer, production of CSF, important stuff. Okay, so this was all about the structural covering of the brain, but brain is not the only thing in the central nervous system. We also have a spinal cord, or spinal cord is also surrounded by meningeal coverings, and those are something that we are going to start now. वही 3 layers हैं. spinal cord की भी 3 layers हैं. There is a dura mater,
then the second layer should be an arachnoid matter, and the third layer should be the pia matter. So these are the three coverings, the same coverings. लेकिन क्या differences हैं, कुछ comment है इसीलिए इनको अलग किया हुआ है ना. Like the brain, the spinal cord in the vertebral column is also protected by three layers. The first one is dura mater. The dura mater in the spinal cord is a dense, strong, fibrous structure. जैसे brain में था, it was dense, strong and fibrous structure that encloses the spinal cord as well as the chorda equina, the last part of the spinal cord. It is continuous above through the foramen magnum with the meningeal layer, not the endosteal layer, क्योंकि endosteal layer spinal cord के around नहीं होती. Endosteal layer only is restricted to the cranium. ठीक है. Inferiorly, it ends at the phylum terminal at the lower level of the lower border of the second sacral vertebrae. ये important point है, याद रखना कि किस meningeal layer की स्पाइनल लोअर लिमिट क्या है. ऊपर तो दे आर ऑल कंटिन्यूस विद द ब्रेन ना, ये तो इजी है कि दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, ऊपर ये ब्रेन के साथ ये सारी लेयर्स कंटिन्यू हो जाएंगी. नीचे किस लेवल पे कौन एंड हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है. सो ड्यूरा मैटर जो है S2 का लोअर लेवल. द ड्यूरल शीथ लाइज लूजली इन द वर्टिब्रल कैनाल एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल बाय एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस. ये नाम समझ में आता है, ड्यूरा के बाहर की स्पेस. दिस कंटेन्स लूज एरुलर टिश्यू एंड सम वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सेस. सो फॉर एग्जांपल ये बोनी लाइंस होंगी साइड में और ये गुजर रहा है बीच में स्पाइनल कॉर्ड और ये है ड्यूरा मैटर. तो ड्यूरा मैटर और बोनी कैनाल यानी वर्टिब्रल कॉलम के बीच में दिस स्पेस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस. इसमें वेनस प्लेक्सेस है, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है. द ड्यूरा मैटर एक्सटेंड्स अलोंग ईच नर्व रूट and becomes continuous as the connective tissue surrounding each spinal nerves which blends with the epineuron. अब ये देखें स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ से नर्व्स निकलेंगे ना, जाहिर है स्पाइनल नर्व्स. तो ये जो ड्यूरा मैटर है इनके साथ निकलती है, कुछ डिस्टेंस के बाद ब्लेंड हो जाती है एपिन्यूरियम के साथ. सो दैट्स again something which is easily understandable. And the inner surface of the dura mater is in contact with the arachnoid matter. So जाहिर है second layer जो dura mater के बाद होगी फौरन, that will be the arachnoid matter. So the layer number 2 is the arachnoid matter. Arachnoid matter brain में भी ऐसे ही था, there was dura mater and then there was arachnoid matter. The arachnoid matter is a delicate membrane. Brain में भी it was a delicate membrane and it covers the spinal cord and lies between the pia mater which is the innermost and the dura mater which is the outermost layer. It is separated from the pia mater by subarachnoid space which is also filled with the CSF. Same story जो brain में थी. The subarachnoid space is crossed by a number of fine strands of connective tissue. Same story. The arachnoid matter is continuous above through the foramen magnum with the arachnoid covering of the brain. Inferiorly, it ends at the phylum terminal at the lower border of the second same चीज़ है. So dura mater और arachnoid matter same level पे finish होती हैं, lower border in the spinal cord. The arachnoid matter continues along the spinal nerve roots and blends with the epineurium. Easy stuff. Third layer, which is the pia mater, innermost layer. The pia mater is here also a vascular membrane that closely covers the spinal cord, is thickened on either side between the nerve roots to form the ligamentum denticulum. That's an important point. So ligamentum denticulum अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन ये होता है कि what is ligamentum denticulum. So it's nothing but the thickening of pia mater between the nerve roots. अब देखें, ये बात ये है कि ये स्पाइनल कॉर्ड होगा ना, इसमें से ये एक नर्व रूट निकल रही है, दूसरी नर्व रूट निकल रही है, तो यहाँ इसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड के साथ यूं pia mater की एक एक्सटेंशन निकलेगी एंड दिस एक्सटेंशन इज नोन एज द लिगामेंटम डेंटिकुलम. सो ये इंपॉर्टेंट स्टफ है, अक्सर बच्चों को ये पता नहीं होता. इट्स नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ द pia mater, ठीक है, बिटवीन द नर्व रूट्स. By this means the spinal cord is suspended in the middle of the dural sheath. The support structure है ना ये, this is to provide support. तो अगर ये spinal cord है, ये nerve roots निकल रही हैं, तो ये जो ligamentum denticulum ये ऐसे जाकर के इसको attach करके support दे रहा है ना, बाहर arachnoid है, dura है, उनके साथ connect कर रहा है दोनों side पे. So it is giving support to the spinal cord. The pia mater extends along each nerve root and become continuous with the connective tissue surrounding the spinal nerve. ये basically तीनों में हमने ये बात की है कि if this is the spinal cord, यहाँ से nerve निकल रही है, तो meninges साथ में आएंगी और कुछ देर के बाद they will fuse with the epineurium of the nerve. So that's all about the meninges. Easy stuff. So if you understand carefully, you know all the basic concepts of the meningeal apparatus. You know there are three layers: dura mater, arachnoid mater, and pia mater. उनकी dura के नीचे जो space होगी subdural space, arachnoid के नीचे जो space होगी subarachnoid space, and brain और
स्पाइनल कॉर्ड की जो मेनिंजियल लेयर्स हैं उनमें देयर आर माइनर डिफरेंसेस, सो यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड एंड पे अटेंशन टू व्हाट द डिफरेंसेस आर. फॉर एग्जांपल ब्रेन में जो ड्यूरा मैटर है उसमें एंडोस्टियल लेयर है जबकि स्पाइनल कॉर्ड में नहीं है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. ओके, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो. आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.